inception, conception, the child starts learning when the child inherits mother. माँ पेट्रे शिशु के जितेबाला जन्म हवा पाई पढ़े सेतेबाला थर परिवार अवस्था आरंभ होई थाए तेणु सेही पाई चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज वेरी इंपोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण बापा माँ हिसाब करे हो बा समाज रे सचेतन नागरिक हिसाब रे हो आमे समस्त चाहंती जे आम पिला माने आम समाज रो पिला माने से माने भविष्य रे जेमिति खूब भलो करतु एवं निजको जने सुनागरिक भाव रे प्रतिष्ठित करान एथिरे कार किछि दिमत अछि कि आई होप दैट नोबडी हैज एनी डिफरेंट ओपिनियन अबाउट दिस मु जो कथा तम मान को कहिबी जे मते सुबुनी का को am I audible to you all? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Parani? Yes, sir. Yes, Happy Prapriya Mahanti has left the meeting. Chandramohan. Chandramohan. Hello? Chandramohan. Hello? Hello, sir. Sir, टिके खाली रुहतु समस्ते म्यूट करी दियंतु जम्मार किछ सुना जाउनी प्लीज Chandramohan. Hello? पता समस्तଙ୍କୁ କହୁଛି କି Yes, sir. Yes, sir. सर आपण टोटली भी क्लियर आसुनी कारण समस्त के म्यूट भी करूना मतलब सर आपण सार को डी कहंतु समस्त के म्यूट करिवे कारण आपण वॉइस टोटली क्लियर आसुनी अरे मो कथा सुबुची समस्तଙ୍କୁ यस सर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ସମସ୍ତେ ଟିକେ mute କରିଦେଲେ ଆମେ ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପାରିବୁ। Yes, sir. Am I audible? Okay, very good. Early childhood care and education में हमें DC block 3 कथा में आलोचना करिबा। Part 3 रो प्रथम कथा हला childhood care and education नो it is really very important for all of us. आज आम आलोचनार विषय वस्तु रहिबो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन रो स्कोप बा परिसर केमतिका रहिछि एवं बेसिकली आमर जो विशिष्ट शिक्षाविद पाश्चात्य देश रहंतु बा आम भारत वर्ष रहंतु सेमानकर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऊपर कोन तांकर मतामत कोन तांकर दिग्दर्शन सेमाने देई जाय चंद हमको आमे से विषय संक्षेप रे किछ आलोचना करिबा ए समय भितरे जहार किछि मध्य किछि समस्या थाए फील फ्री टू आस्क मी बुझी परलो तमे जे जहा न बुझी परिबो जेते बेले जहा न बुझी परिबो फील फ्री टू आस्क मी मते पचारि परिबो बुझी परिबो सेतरे किछि असुविधा नै एनीवे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को जिनसटा आमे आगुरु एते गुरुत्व देउ नथिले तार कारण हला कोन ना हमर संस्कृत रे गोटे कथा थिला आपण माने समस्त जानि थिबे लाळयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयत प्राप्ते तु 16 वर्ष पुत्र मित्रम बदाचरत 5 वर्ष पर्यंत लालन पालन करा जाए किंतु एही 5 वर्ष आमे जो 5 वर्ष को भावंती जे जन्म ठारू 5 वर्ष पूर्ण हवा पर्यंत
यही 5 वर्ष एक्चुअली प्रकृत क्षेत्र में देखा गले यही पिला मानक पय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आमे जेमितिका गछटिए लगाउचंती आम बगीचा रे बा आम बाड़ी रे बा रास्ता घाट रे जेकोसी जगह रे आमे गछटा लगेइकिरी कोन ताको छाडी देइकिरी पळे आछंती कि आमे तो ताहा करू नांती आमे गछटा लगेइले केमितिका माटी रे से गछटा हबो ताको मध्ये परीक्षा करूचंती तार आवश्यकीय पानी पवन तार सार खत सूर्य किरण जहा जहा आवश्यकता पड़ुची आमे ताको सेही हिसाब रे दउचंती एवं से गछ ठीक भाव रे बढ़ुची एवं भविष्य रे हमको अनेक कथा से देई पारुची रूपाली किछि कहउछ कि हेलो हेलो एनीवे तेणु जेमतिका आमे गछटा को जत्न न नले गछटा अधीन रे मरी जाए सेमतिका गोटे छोटिया पिला जतले जन्म होउची बा मां पेट रे जतले से अंकुरित होउची सेते बेलु ताको आमे जन्म नबा पर्यंत मध्ये तार दायित्व हमकु बहन करबा को पड़िबो एवं सेही दिन the child is to be taken care of जेतेबेले से मां पेट रे पिलाटी थाए सेतेबेले तार दायित्व प्राय संपूर्ण भाव रे देखिबा गले मां ऊपर ही थाए तेणु सेथि पई हमर परिवार रो समस्त सदस्य माने मध्ये सहयोग करंती विशेष करी बापा पिलार जे बापा हबा को जाउ थाए से बाप ता घर रो अन्य सदस्य माने मध्ये से पिलार जत्न नवा पई ता मां को सहाय्य सहयोग करि थांती ओके B1 आसीनी अच्छा हो जोटा आसीनी से पई चिंता कर नाही वर्तमान जहा अछि हम ताको आलोचना करिबा ओके आलोचना करिबा परे बुझिबा से बही पत्र कथा सेटा पछरे बुझिबा देखिबा कोन होउछि ए जो DC3 रो कोर्स रो उद्देश्य होउछि जे हम माने जानिबा दरकार जे चाइल्डहुड केयर केते इंपोर्टेंट केते गुरुत्वपूर्ण हमर विभिन्न शिक्षाविद भारत रो हंतु आ पाश्चात्य देश रो हंतु से माने बहुत कथा कहि जाइचंती सी ऊपरे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऊपरे सेति से कथा तो हम आलोचना करिबा धीरे धीरे ता पूर्वरु मु तम मान को गोटे कथा कहिबी जे स्कोप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन रो बहुत बड़ रिकॉग्निशन रहिछि तमे जानि थिबो हमर भारत रो गोटे मुख्य कथा हेतिला 1986 मसिया रे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रणयन करा जायतिला 1986 मसिया रे जाधरे बहुत गुरुत्व दिया जायतिला ए जो पिला मानकर प्रारंभिक शिक्षा ऊपर तेतरे गोटे कथा तुम माने पढिथिबो मध्य रिकॉग्नाइजिंग द होलिस्टिक नेचर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट गोटे पिलार चाइल्ड डेवलपमेंट पई कोन कोन दरकार न्यूट्रिशन हेल्थ and social, mental, physical, moral and emotional development. Early childhood care and education will receive high priority. It was the statement given in the 1986 National Policy on Education. जो आमर जातीय शिक्षा नीति 1986 रे एक कथा को अत्यंत गुरुत्वर सहित विचार को निया जायतिला एवं से माने समस्ते चाहिथिले जे हमर जे प्राथमिक शिक्षा उपरे बा अर्ली चाइल्डहुड केयर माने ता प्राथमिक शिक्षा पूर्वरु केमति जन्मरु केमति पिला मानकर लालन पालन दायित्व हम ठीक भाव रे नबा प्रोग्राम्स ऑफ ECEC विल बी चाइल्ड ओरिएंटेड जो ECEC प्रोग्राम ता हम जो करूचंती पिला मानन पई हम कंसीडरेशन को नैचंती इट शुड नॉट बी एनीथिंग अदर देन द चाइल्ड focus should be given to the child only शिशु माननकु आमे प्रकृत भाव रे उचित गुरुत्व दबा सेटा होची हमर प्रथम और मुख्य लक्ष्य बुझी होची मो कथा am I audible and are you understanding me Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir.
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କଥା ହେଲା ଯେ ଆଧରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା, ପିଲାମାନେ ଫୋକସ୍ ହେଇକି ରହିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ମାଳି ହିସାବରେ ବା ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଗଛ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି, ଗଛକୁ କେତିକି ପାଣି ଦରକାର, କେମିତିକା ମାଟି ଦରକାର, କେମିତିକା ସାର ବା ଖତ ଦରକାର, କେମିତିକା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦରକାର, ଯେମିତି ସବୁଆଡକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଆମେ ଗଛଟାକୁ ବଢେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେମିତିକା ପିଲାଟିକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାର ତମାନେ ଶୁଣିଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି ତମାନେ କେତେ ଯୋଉ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ଜାତିର ପିତା, ଜାତିର ଜନକ। ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ବାଇ ଏଜୁକେସନ ଆଇ ମିନ୍ an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. ଆମେ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ଶିଶୁର କେବଳ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ନୁହେଁ, ମାନସିକ ବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ନୁହେଁ, ତାର ସମଗ୍ର ବିକାଶକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହବ, ତାର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହବା ସହିତ ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହବା କଥା, ତାହେଲେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ନିଜକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାଗରିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରେଇ ପାରିବ। ଓକେ, ଆର୍ ୟୁ ଗେଟିଂ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ? ବୁଝି ପାରିଲ? Yes, sir. Okay, thank you. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Development and learning occur in children interact with people and objects. तो वृद्धि हुए वा विकास हुए, कार जो फल आमे पांती, सेटा interacting with the child is to interact with the people and the object. पिला तो छोट पिला तो जन्म हुए, से कौन चाही थाए, प्रथम लोकों को देखे, आमों को तामों को चाहे जाने, तापर नुआ नुआ जिनिस देखे, सबुतर इंटरेक्शन तार हुए, तार इंटरेक्शन ता बढ़े। सेमतिका तापर धीरे धीरे जेतले बढ़े, तार खेल प्रति गोटे आग्रह आसे, पिलाटी खेले, खेलिला बेले मध्य पिलांकु प्रियंवदा कोन कहउछ कि तमे? प्रियंवदा, हेलो, So giving due cognizance to these and similar findings, it is now universally agreed that it is necessary to have ECC program and that these must be holistic in nature. तेणु आम जो ECC प्रोग्राम जो करुँच अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विषय कथा जो आम चिंता करुँच तार उद्देश्य होची जे आमे सामग्रिक भाव रे केमती शिशुर विकास रे भाग नहीं पाइबा, भागीदारी दे पाइबा. That is important. As parents, as a sincere member of the society, as a teacher, we have lot of things that we have to do for the welfare of the child. Then rationale for early child development interventions. Arising from a variety of studies, converge on one clear fact that early years of childhood, intelligence, personality and social behavior, all these things develop rapidly. बहुत जल्दी आर विकास हुए. ये सब जिनस जो कहली शिशुर शारीरिक मानसिक विकास तो बहुत फास्ट हुए. यही समय बापा माँ मानकर गुरु दायित्व रही. They have to understand these aspects of the child. Early years of life have been acknowledged as the most crucial for optimum development of an individual. कथार अच्छे हमर तुलसी दुई पत्र रु बासे. तेणु पिलाटा जेतबेले वृद्धि हुए, पिलार जेतबेले ग्रोथ हुए, प्रथम केते वर्षरु आमे जानि पारंती जे पिलाटा कोन करि पारिबो भविष्यत रे. सेपई हमर कथा रे कहा जाईची तुलसी दुई पत्र रु बासे. ओके, तेणु the first 6 years of life are critical
for development as the rate of development is most rapid in this period. এই ପିରିୟଡରେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟାର ବିକାଶର ଗତି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମାଜର ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ହଉ ବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀ ହିସାବରେ ହଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଓକେ, sometimes an argument for transmitting good values to children fails because people consider it too idealistic. For such people, a more convincing argument is the economic one. आमे अनेक समय भावंती पिला मान को ए छोट पिला मन काई पैसा खर्च किंतु एटा जे हमरो खर्च नुहे रादर इट इज एन इन्वेस्टमेंट। त माने जानि थिबो कि नहीं इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर भितरे फरक अछि। आमे पिला मानन को ऊपर जो खर्च करंती सेटा को आमे साधारण माने खर्च बोली न भाबी कि ताको हम भाबे सेटा हम करूछनी भविष्य रे किछि आमे तादर किछि रिटर्न्स पाइबा। इन्वेस्टमेंट रो कथा ला कोन आमे किछि आजि देले तार परवर्ती पर्यायर आमे किछि ताठू अधिका आशा करिबा अधिका पाइबा। ओके, जदियो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टिके कॉस्टली बोली अनेक भावंती किंतु तथापि इट इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस। व्हाट शुड बी डन, आमे कोन करिबा उचित आमे हबो सबुठु भलो कथा हला हमकु करिबा उचित why we should reach children and families who are most in need। आमे ए समय कोन जने शिक्षा कर्मी हिसाब रे हमर कर्तव्य कोन आम माने जो पिला माननको पाखरे सुविधा सुजोग नाही सेमाननको पाखरे सुविधा सुजोग को पहुंचेबा एवं आमे देखिबा जेमति सेमाने केमति सुविधा सुजोग रो सदुपयोग करि परिबे। that should be the most focused aspect of our program। ए भले शिशु माननकर विकास पई विभिन्न देश रे विभिन्न प्रकार प्रोग्राम करा जायछि। केवल जे भारत वर्ष रे करा जाउ से कथा नुहे ए विषय आमर नेबरिंग स्टेट नेबरिंग कंट्रीज जेमते हला गोटे नेपाल रे गोटे नेपाल प्रोजेक्ट ऑफ अर्ली एंट्री पॉइंट गोटे करा जायतिला। एटा गोटे बढ़िया जिनसटा जोटा कि हम माने गां गहली रे मोर मन अछि मु जतबेले एक कथा काली भाबुथली मन गोटे कथा आसिला तम माने केते दूर से विषय जानिछ कि नै मु कहि परनी। आमे जतबेले छोट पिला थिलु हमर गां रे सब गाई पाळी करा जाउथला। तम माने हसी पार तम माने भाई परियो जेटा इरिलेवेंट हेई पारे अप्रासंगिक है बोली भाबु थाई पार किंतु मोर प्रासंगिकता अनुभव करछि बोली तम मान को पाखर कहबा उचित मने करूछि। तमन देखिथिबो आगुरु माने बे गां गहली रहउथिन समान मते जानि से आगुरु गां रे सब गाई गोरु माने सब रहउ गाई गोरु तो एई बाहर कोन छाडी न मनुष्य गाई गोरु के लोकने से बुली के जाने ता खाउनथले से कथा नथिला। पाली करा हेकरी गाई माननकु गोटे गोटे परिवार को दायित्व दिया जाउथला कि 2-3टा परिवार मिसी गोटे दायित्व नउथले से माने धरंतु ये सप्ताहटा से माने सेही परिवार लोक से गाई माननक दायित्व नेबे से माने प्रत्येक घर गाई आसीबो से गाई को नेबे चरेबे पुणी आनी तांको घरे आनी के छाडीबे एमतिया गोटे सिस्टम थिला। ता द्वारा कोन होउथला ना जो लोक माननकर गाई थिला समस्त गाई को पई व्यस्त होउथ जो जाक से अन्य कार्यक्रम करूथले केवल जो परिवार माननकु सेही दिने बा 2 दिन बा 3 दिन पई जो दायित्व दिया जाउतला सेमानकर दायित्व थिला सेमाने अन्य माननकर गाई गोरु को नेबे एवं ताकु ठीक भाबरे घास फास जा खाइबा कथा बुलाबुली करेबे तापर आनी ताकु परस्पर को निज निज घरे सेमान को छाडीबे ए थिला दायित्व एवं अन्य माने अन्य काम रे व्यस्त रहइबो अन्य अर्थनैतिक कार्यक्रम हो सामाजिक कार्यक्रम हो जार जा व्यक्तिगत काम से काम मान सेमान सब करूथिले। नेपाल रे से पिला माननकु छोट छोट पिला माननकु पाळिबा पय मते से बेला गोटे स्कीम करा जायथिला जार ना होची नेपालस प्रोजेक्ट एंट्री पॉइंट। तादरे से माने कोन करूथिले ना छोट छोट पिला माने जदि घरे रहिले नेचुरली मां माने पूरा बांधी हेकी रहि जाउथिले मां माने कुआडे बाहरी पर नथिले काहे ना छोट छोट छुआ मानकु छाडी से का पाखरे जिवे। किंतु नेपाल रे से माने एम्ति गोटे कले गोटे सोसाइटी टाइप रो तयारी कले जा फल रे कि छोट छोट पिला मानकु पाळिला भलिया जांको घरे छोट छोट पिला माने अछंती तांग घरे गोटे पिला अछि छोट छुआटी अछि त अन्य जेमति धरंतु गोटे छुआ अछि अन्य छुआ माने तांको पाखरे आसी रहिबे से सब 5-7 जन छुआंकर से दायित्व नेबे
जने दिने दिने पाई हो बा 2 दिन पाई हो 3 दिन पाई हो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेस से माने कोन करूथिले ना एमती पाळी करी पिला माननको आ घरे ता घरे एमती छाडुथिले जो अन्य स्त्री लोक माने जो रहिले से माने तांकर जीविका अर्जन पई ता विभिन्न काम रे निजको नियोजित करूथिले देखो केमती चिंताधारा थिला एबे भी अछि से सिस्टम एबे भी चली छि नेपाल रे जो माने छोट छोट पिला माननको समस्त सब पिला माननको जत्न नबार आवश्यकता नाही जो जहां को घर छोट छोट पिला माने अछन से माने 2-3 जण स्त्री लोक माने एकाठी हेकरी से गां रे थिबा बा से अंचल थिबा जते पिला माने अछन समस्त को नै जाउथिले तांको घर निज घर नै रखुथिले एवं तांको लालन पालन करथुले से माने तांको मां माने जतले काम सारी घर को करथुले से माने आसी से पिला माने तांको घर को नै जाउथिले थिंक केते बढ़िया जेंति हमरो गां जो गां कथा कहली गां रे जेंति पिला बेले हमें गाई कथा गाई पाळी कथा कहउथिले ए सेही भलिया सेही टाइप रो जिंसडा किंतु एठी गाई बदल रे से माने छोट छोट पिला मानन को पाळी करी विभिन्न लोक घर निज निज घर रखि से मान को पाळुथिले सेमति का आगो पेरू रे मध्ये होट प्रोग्राम हिथिला जाको प्रोनोई बोली कहा जाए पेरूस प्रोग्राम ऑफ इनिशियल एजुकेशन जादर कोन थिला द इनिशिएटिव फॉर दिस came from a university whose volunteers planned nutrition education and cooking mid morning snacks from 3 to 5 years of age ओटे यूनिवर्सिटी रो पिला माने से माने चिंता कले जे आमे केमती न्यूट्रियस फूड केमती पिला मानन को दिया जाई परिबो तार केमती काम करा जाई परिबो से कथा से चिंता करी से प्रोग्राम ता आरंभ कले जाको आमे कहउतंती पेरूस प्रोग्राम ऑफ इनिशियल एजुकेशन तापरे आजर थिला कोना पेरू सुषम खाद्य केमती प्रस्तुत करा जाई परिबो गां गां मानकर सुडा बुली करी से लोक मान शिक्षा दउथिले एवं से माने केमती सुषम खाद्य तयारी तापरे तृतीय कथा हला थाईलैंड एशिया आ गोटे देश थाईलैंड बोली थाईलैंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूट्रिशन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आदरे से माने कोन को भलो कथा से करिसंती आमे जानिसंती जे हमरो भारत वर्ष रे इवन एपर्यंत भी बहुत स्त्री लोक माने अछंती मां माने अछंती भोणी माने अछंती जो माने की शिक्षा रो वंचित होइछंती जो समय रे कथाटी आरंभ हला 1986 मसिया जतो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन हला से समय रे कथा को बहुत गुरुत्व दिया जाइथिला जेहेतु आम पाखरे वर्तमान बहुत अशिक्षित बा अर्ध शिक्षित मां माने बा मौसी माने बा मां माने अछंती सेमानंकु कोनोसी जिंस कहि करी बुझेबा कष्ट होई पारे तेणु थाईलैंड रे से पिला माने कोन कले ना एई भलिया पिला मानकु बुझेबा पई से माने किछि वीडियोग्राफी कले तुम माने देखिथिबो हम कथाटा सुनिले जति मन रखि परिबा देखिले ताठो बेसी मन रखि परिबा सुनिले जति बुझि न परिबा देखिले ताठो बेसी बुझि परिबा तेणु से माने गोटे वीडियो प्रोग्राम डेवलप कले जे विभिन्न कथा विषय रे केमति पिला मानकु शिक्षा दिया जिवो केमति पिला मानकु लालन पालन करा जाय पर केमति पिला मानकु न्यूट्रिशन बा पुष्टिकर खाद्य केमति जोगै दिया जाय परिबो से विषय रे से माने ए कले ता ऊपर वीडियोग्राफी तैयारी करी गां गां रे सेटा नेकी वीडियो गुडा को देखतेले हमर मध्य गां रे आगुरु एमतिका प्रोग्राम गुडे उन्न करा जाय छी वीडियोग्राफी माध्यम रे विभिन्न प्रकार प्रोग्राम कराय ता जनसचेतना सृष्टि करिवार मुख्य उद्देश्य है ए होची तीनटा प्रोग्राम जहा द्वारा पिला मानकर विकास हेई परिबो छोट छोट पिला माने तांकर दैनंदिन हमर जो बापमा हिसाब बापमा हिसाब रे हमर जो तांको प्रति जो आस्था विश्वास जो सब रहउची सेटा केमति ठीक भाव रे रियलाइज हेई परिबो सेई पई मु तीनटा उदाहरण तुमको से विषय रे कहली जहा तुमको ए बही रे उल्लेख करा जाई छी तापर आमे वर्तमान आलोचना करिबा सम थियोरेटिकल ओरिएंटेशन इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन थियोरेटिकल ओरिएंटेशन इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन तादरे किछि विशिष्ट शिक्षाविद पाश्चात्य राष्ट्र रहू बा आम भारतीय शिक्षाविद मानक विषय रे एवं सेमानंकर शिक्षा नीति सेमाने कोन कहउचंती से विषय रे मध्ये आलोकपात करिबा ता पूर्वरु मु तुमको खाली केते गुडे कथा कहबा को चाहूची तम माने एटा सुनो टिके जेमति कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन शुड मीट द चाइल्ड्स नीड फॉर प्रोटेक्शन
food and health care, along with the needs for affection, security, stimulation, and learning opportunities. ए गोटे कथा मन रख केवल जे पिला को खाइबा दरकार सेटा मस्ट ता सहित मध्य ताकू स्नेह श्रद्धा एसबू जिनस मध्य दरकार तेणु स्नेह श्रद्धा एगुड़ाक दबा निहाती आवश्यकता रही पिला माननकू मु एठी अप्रासंगिक होई पारे बा न होई पारे किंतु मु भाबिली एटा प्रासंगिकता अछि बोली सेई पई काना छोट पिला माननकर जो छोट छोट पिला मन जो जन्म पर कहा ऊपर दायित्व रहउछि बेसी दायित्व रहउछि बाप मां मानन को ऊपर पेरेंट्स मानन को ऊपर तेणु पेरेंट्स माननकर 10टी मुख्य दायित्व अछि एभली पिला मानन को बढ़ेइबा पाई मु से विषय तुम 10टी पॉइंट विषय तुम साथ टिके आज आलोचना करबा पई चाहूची our schools teachers textbooks tell us how to be an obedient student responsible citizen and good human beings but no one tells us how to become a good parent आमको समस्ते कहिचंती केमती पाठ पढ़ले केमती भलो छात्र हबा भलो दायित्व संपन्न नागरिक हबा एवं गोटे सुनागरिक बा सुमनिषटी हबा भलो मनिषटी हबा किंतु केही हमको केबे कहउनांती केमती गोटे भलो पेरेंट हबा भलो पेरेंट्स न होई पारिले ताहाले हमें पिला माननकू सब शिक्षा देई परिबा नाही तेणु सेई पई भलो पेरेंट्स हबा पई कोन आवश्यकता रही से विषय मु तुमको टिके कहबा को चाहूची एटा प्रासंगिकता निश्चय अछि यार ऑब्जर्व योर चाइल्ड्स इंक्लिनेशन तमे तम पिला माननकू लक्ष्य कर जो जो छोटिया पिला माननकू तमे जन्म देइछ ए कथाटा को तम माननक जरिया रे मु पेरेंट्स माननक पाखरे पहुंचेबा को चाहूची जो माने कि छोट छोट पिला माननकर जनक बा जननी ऑब्जर्व योर चाइल्ड्स इंक्लिनेशन सबु पिला माने तांको क्षेत्र रे विशेष दे आर द बेस्ट नो डाउट अबाउट इट आम आंगुठी 5टा आंगुठी मध्य समान नहीं सबु पिला माने केबे समान किंतु सबु पिला मान जन्म नहीं थांती किछि विशेष गुणर अधिकारी भाव रे ताकू एज ए पेरेंट्स वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरीवन इज born with a distinctive auras if a child follows his capabilities and interest it will bring him success easily with minimum efforts जदि गोटे पिलार जहा माने अंतर्निहित गुण अछि ताकू जदि हमें ठीक भाव में फोकस करि परिबा ताले नेचुरली से पिलार विकासटा संभव होई परिबो तेणु एज ए पेरेंट वी मस्ट अंडरस्टैंड इट एज पेरेंट्स आर द चाइल्ड्स फर्स्ट टीचर आमे बापा मां मानू केवल से माने बापा मां दायित्व केवल खाद्य पेयर कथा बुझिबे नहीं आमे जदि काहाकू गुरु बोली प्रथम मानि थिबा ताले से बापा बा मोर मां निश्चय आमे प्रथम जदि का अंगुठी धरि चली थान से मां नल मोर बापा तेणु पेरेंट्स मानकर गुरु दायित्व रहउची काहे कि ना से माने होचंती पिला मानकर प्रथम गुरु फर्स्ट टीचर ऑफ द न्यूनेट्स ऑफ द बेबीज ऑफ द चिल्ड्रन nourish those talents and knacks and help him to achieve more in life a good guitarist जोटे भलो गिटार बजाए is way better than a bad doctor आम बाप मां मानकर अनेक समय इच्छा हुए कौन जानिछ जे मु तो ही पारलिनी मो पिलाटा केमती सेया हेई जाऊ जोटा कि मु आदौ पसंद करे नहीं तम माने मध्य कथा को मन रख तमे जेहेतु वार्तावह हिसाब रे काम करबा को जाउछ सामाजिक वार्तावह हिसाब रे ए वार्ता सब पितामाता पाखरे पहुंचाओ जे तुमे कोन चाहुछ ताहा पिला ऊपर लदी न दिया जाई पिला कोन चाहुची ताकू गुरुत्व दिया जाऊ दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट जणे आमे चाहुचंती जणे डाक्टर करिया पई किंतु से भलो गिटार बजाया पई तार आग्रह अछि a good guitarist is better than a poor doctor remember this thing a famous film 3 idiots त माने देखिथिबो बोधे हम भाबुची से जो कथा कि ए कथा ऊपर ता ऊपर गुरुत्व दिया जाय छै जदि मु गोटे कथा तुमको कहबी तुमको
केते जो प्रासंगिक लागिवो न लागिवो मु कहि पारु नाही किंतु तथापि आई थॉट दैट इज इंपोर्टेंट टू शेयर माय फीलिंग्स विथ यू सचिन तेंदुलकर को जदि लता मंगेशकर करबा पई कुआ जाई थांता लता मंगेशकर गीत बोलिबा पई लता मंगेशकर को गीत बोलिबा पई कुआ जाई थांता ताले कोन अवस्था ही थांता सेमति का आम पिला जदि चाहूची जे भलो गिटार टे बजै कि भलो गिटारिस्ट ही पारिबो फ्यूचर रे बा भलो खेलाड़ी टे ही कि भलो खेली पारिबो फ्यूचर रे सेटा हम पई गुरुत्वपूर्ण आमे चाहूतिबा डॉक्टर बा आमे चाहूतिबा आईएएस अफसर बा आमे चाहूतिबा इंजीनियर बा आमे चाहूतिबा अध्यापक होबार किछा आवश्यकता नै ता तको कोनोसी ता जीवन काल भितरे मध्य कोनोसी भाबरे शांति बा संतुष्टि देई पारिबो नै आ गोटे द्वितीय कथा हला डू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स एंड फेल्योर्स रिमेंबर each parent as a senior citizen as a caretaker as a teacher of early school children you must understand this that failure is the pillar of success आ गोटे कथा हमें जानी चंद सब बळे मनुष्य मात्र ही भूल बोले हमें कहंती तो एयर इज ह्यूमन मनुष्य मात्र ही भूल कार नहीं समस्तंकर भूल अछि those old proverbs still work wonders if you don't accept your child's mistakes today tomorrow his success won't bring those tears of joy think of आज जे तुम तमर भूलटा को पिला मानकर भूलटा को ग्रहण न करि पाइबो नेचुरली कोन हबो ना तारो भविष्यत रे जेते भलो कले मध्य तुम ता संतुष्ट होई परिबो So if he makes mistakes, guide him and aware him with its consequences. If he fails, encourage him and tell him not to lose hope. जे थरे जे फेल ही गला हारी गला ता अर्थ न जीवन सारा से हारु थिबो ता अर्थ न जीवन सारा से फेल ही चली थिबो ता निश्चय फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस वी मस्ट इम्बाइब दिस स्पिरिट अमंग दिस यंग चिल्ड्रन डोंट कंपेयर विथ अदर्स गोटे कथा मन रख आमर गोटे चिराचरित गुण तुम माने केते दूर मो सहित सहमत हबो मु जानिनी मु देखिछि मो अंगे निभैथिबा कथा मु देखिछि अनेक पेरेंट्स माने से माने भाबंती जे मो पिला माने ता पिला थारु आउरी भलो होंतु किरे काहे की व्हाई डोंट कंपेयर विथ अदर्स इफ टू फिंगर्स ऑफ आवर हैंड आर नॉट सेम it is foolish to compare your son with Sharmaji's beta तो शर्माजी रो पुओ देख से केमती करछि से केमती हैला से केमती से हैला तू काहे के परिबुनु नॉट लाइक दैट competitive mindset is good but blind rat race is not remember आमे गोटे competitive mindset करेबाटा को मना करू नाही I am not refusing that you should not develop a mind to compete with others, but it should be in worth. It should be with value oriented. It should not be like a blind rat race. Teach him to follow some ideologies of some great people of the world. पृथ्वीर विभिन्न बड़ बड़ लोकों को विषय तांको सहित आलोचना करो तांको फॉलो करबा पई तांकर किछि गुण ताको देखिबा पई कहो instead of but don't compare with neighbor's son पाख पड़ोसी रो पिला सहित कंपेयर कर नाही you must not suffer from any kind of inferiority complex at all आ द्वारा कोन हबो ना पिला मानन को भीतर गोटे inferiority complex सृष्टि हबो जो inferiority complex ता की ताको भविष्यत रे बहुत खराब परिस्थिति रे पहुंचे दो तो that inferiority complex should not be created by us at any point of time remember this thing then agote katha mu kahibi je set an example by yourself gote bhalo katha mor मन पड़िला आमे सबले पिला मानन को कहंती सत कहि पछे मले मरिबी सत कहिबा को किया डरिबी किंतु अनेक समय रे मु देखिची बाप मां माने जदी के आसी डाकिला बाहरे अरे कहिदलु बापा नांती बोली आदरु पिलाटा कोन शिखिला आपण माने निजे भाबंतु यू प्लीज थिंक ऑफ आपण निज पई निजे उदाहरण सृष्टि करूनांती आपण जो काम करूचंती सेही काम रे आपण को पिला माने ही प्रभावित होउचंती थिंक दिस थिंग मोस्ट इंपोर्टेंट
बहुत गुरुत्वपूर्ण आमे जहा करिबा अनेक समय रे पिला माने ताकू देखिकरी अनुकरण करी ताहा करी थांती तेणु इट इज माय ऑनेस्ट अपील टू यू ऑल as a parents, as a teacher educator, as a teacher, as a social worker, you must understand this thing. You should set an example for others. Okay, don't be a director, be the performer, please. Most of the people do not do what they say and vice versa. If I tell someone not to use slang and I don't follow it, it will take me as fake. So always let your child learn from your actions along with your words. तमे कोन करूछ पिला माने ताको ठीक भाबरे ऑब्जर्व करंती पिला मानकर दृष्टि शक्ति बहुत प्रखर पिला मानकर बुझिबा शक्ति बहुत प्रखर ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट तमे भाबनी जे मु जहा करूची मो पिला देखिले कोन से कोन बुझितो सिकी जानि नथु नॉट लाइक दैट तमे जहा करूछ भाबी चिंती की करो how you should create a role model for yourself so that your child will not disrespect you in future. Your child will definitely respect you for this quality of yours for sure when they will grow up. यदि तमे जहा कहूछ ताहा करूछ सत कहिबा को क्या डरिबी सत कहि पछे मले मरिबी यदि ताको ठीक भाबरे तमे पालन करूछ खाली कहूना ह मुहरे ताको मध्य तमे ठीक भाबरे कर्तव्य रे फॉलो करूछ ताहले मन रख तम पिला माने तुमको भविष्य रे उचित सम्मान देबे बी फ्रेंड इन नीड बी स्ट्रिक्ट एट टाइम्स सब बेले तुम पिला मानन सहित संग हो किछि मना नै किंतु बी स्ट्रिक्ट इन सम टाइम्स सब बेले संग होबा भलो म खराब नै किंतु अनेक समय स्ट्रिक्ट मध्य होबा रिवार्ड योर चाइल्ड फॉर हिज गुड डीड्स बी स्ट्रिक्ट टू इफ ही डज रॉन्ग though I won't suggest physical punishment much but your words will be enough to make him realize that all your anger is for his future benefits only पिलान को पाखरे मेसेज तम भीतर थिबा ए जो वार्ता पहुंचबा दरकार जे बाबा मु तते जहा कहूची आ द्वारा तोर किछि क्षति हला बळिया कथा कहूनी जहा मु कहूची ता तू जल्दी पालन करिवु ताले मन रख तू भविष्यत रे निजो गोटे प्रतिष्ठित नागरिक भाव रे परिगणित करै परिबु this type of feelings this type of सचेतनता तांको भीतर आनिबार अछि we must try to develop that type of abilities among your children so that they can always remember encourage him in public but correct him in private आउटे कथा मन रखियो आमे पिला मसन सेठी बाडी दिन चैप्टर पके दवा डोंट डू दैट सेठी ताको कोह ताको से धरि के आसो घरे ताको बुझाओ बाहर ताको किछ कथा कहो नाही अन्य मानक सामना ताको जदि बेजित कला भलिया कथा कहबो छोट छोट पिला बहुत कथा तांको मन रे शक लागे दया करी करी encourage him in public but correct him in private children have high self respect level सेमाने मध्य तांकर मध्य आत्मसम्मान अछि भूली जाओनी जे सेमाने आत्मसम्मान हीन पिला बोली भाव नाही make him a good human being first if morals are low success is meaningless so teach him to become a human being in true sense a sensible man with high thoughts are not only respectable in society but also self-satisfied within. The definition of success changes time to time. For a 2-year-old standing on his own feet is a success. Similarly, for 6 years working new success. For 20 getting a good job is a success. Moreover, if you teach him to have patience and perseverance, success will come automatically. So make him a good human being first, then automatically everything will be achieved by the child. No doubt about it. Teach these healthy habits. Peace is more important than pace in life. Shanti hochi sabutharu mauliko avashyakata am samastanko pai. And peace comes from within if your habits are healthy. Jodi pilamankor habits ba ame bapma hisabar amar habits jodi thik achi ताल ऑटोमेटिकली शांति विराजमान करियो भाबिबार नाही वैल्यू फॉर कमिटमेंट पॉजिटिव एंड प्रोटेक्टिव फॉर डियर वंस बीइंग अडॉप्टेबल टू एवरी सिचुएशंस फोकसिंग ऑन एक्शंस देन वर्ड्स
not to cheat people, not to waste food, not to waste money, maintaining proper hygiene, regular physical exercise, eating right, etc. These are some healthy and essential habits which will help him in each and every moment in life. एबड़ा सब healthy habits तांको भितरे बढ़ेवा को पड़िबो एवं we should be an example before your young children. They must follow you that yes, my papa is doing like this, my mama is doing like this, my brother is doing like this. So naturally they will feel like to do it as you have done it in their early age. Don't quarrel with your partner. आ गोटे भल कथा आमे सब घरे घरे देखुछन आजिकली घर कली अनेक समय बहुत बहुत समस्या सृष्टि करिथाय यदि बापमा मानक भितरे यदि सुसंपर्क नाही नेचुरली तार प्रभाव पिला मानक ऊपर पड़िथाय त बापमा माने यदि निज भितरे किछि तांकर डिफरेंस अछि ताकू से पिला सामना रे नाही ताकू से रागी कि बड़ पार्टी करी न करी जे कथा तांकर भितरे सॉर्ट आउट करंतु पिला का सामना को एसब कथा नियंतु नाही जे वी आर डिफरेंट इन नेचर इट शुड नॉट बी प्रोजेक्टेड संपर्क भल न रहिबो बा परिवार भीतर संपर्क यदि भल न रहिबो नेचुरली तार प्रभाव वेरी कुप्रभाव पिला मानक ऊपर पड़िबो छोट छोट पिला मानक ऊपर पड़िबो काना से माने दे यूज्ड टू ऑब्जर्व एवरीथिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग इन देयर फैमिली सो मेनी ऑफ अस faced this problem during our childhood but hope this generation as parent will introspect it more keenly. If you quarrel with your partner or use slang, then it will not only keep you depressed, but also put extreme psychological pressure on your children. Serious discussion can be done away from your child and in a gentle way. In this growing era of divorces, valuing self-respect is essential. Remember, binding your family in a thread of love and respect must be the first priority for us. आमे परिवार भीतर निज को गोटे भल सूताक्षर बांधिक रखा that should be important before us so that the child can learn from it and he can implement this in his future. Guide him to focus on hobbies and passion. Life will leave you wounded with depression and loneliness so many times, but your passion will heal them. हमर जो इच्छा थी तार ता भीतर इच्छा शक्ति को डेवलप करे पड़ो. Yes I can, yes I can, yes I can. You have to imbibe the spirit like this. हम पारिबी मु निश्चय पारिबी काहे की पारिबी जदी ये पारला से पारला मु काहे न पारिबी निश्चय पारिबी ए भलिया गोटे इच्छा शक्ति ता भीतर पुरेबा को चेष्टा करन. Then you will see that your child will grow and that will be the success of the early childhood care and education. Education will take your child to his goal, but hobbies will bring joy to his soul. So instill the zeal and encourage him in dancing, painting, singing, writing, like any other hobbies, so that he will grow with that. Your child, clear him about family expectations. आ गोटे शेष कथा कहबी जे आमर बापमा हिसाब रे आमर बहुत एक्सपेक्टेशन रहे पिला मन. हेलो यस सॉरी फॉर इंटरवेंशन. ओके आमे बापमा हिसाब भाव रे आमर अनेक समय पिला मानक ठारो अनेक एक्सपेक्टेशंस रहे. आमे भावंती जो कथा हम आगुर मध्ये कहिथिले बा आउथरे ताको रिपीट करछ. क्लियर हिम अबाउट फैमिली एक्सपेक्टेशंस. लास्टली टीच योर चाइल्ड टू शेयर almost everything to any of the family members. आमे गोटे कथा सबले लक्ष्य करथिबा जदि हमर एक्सपेक्टेशन पिला मानक ऊपर बेसी रहइबो पिला माने अनेक जिंस लुचेबा को इच्छा करिवो. जदि हमर कम्युनिकेशन गैप रहइबो पिला बापमा मानक भितरे बा शिक्षक बा छात्र छात्री मानक भितरे नेचुरली छात्र छात्री माने बा पिला माने बापमा मानक बा छात्र छात्री माने गुरु गुरुजन मानक कहबा पे उचित मन करिवे नाही. तेणु एमितिका गोटे परिवेश परिस्थिति सृष्टि करा जाऊ पिला मानक भितर गोटे एमिति गोटे कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करा जाऊ so that they will feel like to express. It may be right or it may be wrong.
मु तुमको गोटे छोटिया कथा कहवाक चाहूँगी मोर थरे मोर जो छोट छुआटी होता मुझे दिने गोटे कथा कही बाबा दुनिया रे भूल कौन ठीक कौन आमे ठीक भाव में कहवा संभव हम ना कहीं जोटा आज मो पाई भूल हूँ तो अन्य मान ठीक हो पारे बा जोटा आज आम पाई ठीक अन्य मान भूल हो पारे तेणु भूल ठीक रो संज्ञा कौन ताको बुझेबा मो निज अनुभूति कहूँ मु गोटे कथा कही जे जो कथा तू तो बाप माँ मान को न कही पारिबु सेटा जानिबु जे सेटा हूँ सबुठारु गोटे भूल कथा। मोनालिसा किछि कहूछ कि ओके एनीवे जे भूल ठीक रो प्रभेद बुझेबा पई मु गोटे कथा कही जे जो कथा गोटे पिलाटी ता बाप माँ मान आगे बा ता घर परिवार लोक मान आगे न कही पारिबो ताको हमें भूल बोली भाबिबा तेणु ये गोटे परिस्थिति परिवेश सृष्टि करबा उचित पिला मान भीतर एमितिया गोटे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करबा उचित so that they will feel like to express their feelings without hiding anything, at least any one member of the family कहा पाखरे से जेमती तांकर मनर कथा को प्रकाश करबा को समर्थ होतिबे मनर जेमती एक कथा जानो तो काळे कहले से रागी जिवे आळे मते बाडीबे आळे मते घर बाहर कर देबे आळे मते कान मोडी देबे आळे मते खाया को देबेनी आळे मते बहिपत छेड़ी नेबे आळे मते नवा ड्रेस देबेनी एमती भलिया चिंता धारा तांक मनरे आसीबा उचित नुहे so that they can feel like that yes I can speak it out मु कहिबी निश्चय कहिबी I will not hide this thing in myself. So these are the role and responsibility of parents for the growing children. Now we'll discuss about the most important aspect of today's presentation, that is what you call we'll discuss about some of the important thoughts of important educationists, so those who have given high stress on the early childhood care and education. Let's start with one important state the basic ideas in educational philosophy of Comenius, Rousseau, Froebel, Tagore, Gandhi, Modak and Warren. We'll be giving you some fundamental ideas about the thoughts of these important educationists of the globe on the elementary child education or early childhood care and education. Let's start with Comenius. Was born in Moravia province of Czechoslovakia. He was amongst the first to reflect the new scientific spirit of 16th and 17th century. He objected to the traditional system of education. His philosophy was that the teacher's role should be friendly. Teachers should act as a friend. Think of in the early 18th century. In the early 18th century or 17th end part of the 17th century, he has given this idea that teachers should be friendly, teachers should not be rough and tough. The students should consider that teachers are the friends so that they can share all their feelings before them. So they will feel like to express their feelings so that nothing can be hidden. को जिनस से लुचई पारिबे नहीं, सब जिनस से प्रकाश करि पारिबे एवं यदि प्रकाशित हला भूल ठीकटा कोन हम जानि परिबा एवं पिलान को उचित मार्ग रे नै परिबा. ओके तेणु से गोटे बही लिखिथिले द ग्रेट डिडैक्टिक बोली नीति दर्शक बोली जो बही रे से डिस्कशन करिसेंती एम्स ऑफ एजुकेशन करिकुलम कोन होवा उचित टेक्स्ट बुक केमते होवा उचित केम को भाषा रे को भाव रे पाठ पढवा उचित मेथड्स ऑफ टीचिंग कोन होवा उचित फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. दिस बेसिक एजुकेशन एंड फिलोसफी कहूची जे 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड पिलानकर चारिटा स्टेज रहिची से स्टेज गुडी को हला गोटे स्टेज हला जे Comenius proposed a system of school covering the period of from birth to maturity, dividing the period of life child's growth into 4 distinctive grades. One is infancy, shoisava, then childhood, then boyhood and youth.
आमे चारिटा सोपान देइकरी पिला माने समस्ते बढ़ुचंती आज आमे ए स्टेज रे पहुंचचंती ओके तेणु गोटे ला इन्फेंसी चाइल्डहुड बॉयहुड एंड यूथ चारिटा सोपान दे आमे समस्ते बढ़ी थांती he proposes that 6 years of schooling for each grade सबु ग्रेड पय 6 वर्षीय शिक्षा दबा for infancy the first 6 years in his classification Comenius proposed that the mother's lap should serve as the school पिला कोल से पिला स्कूल बोली परिगणित हो जहाँ ठारू कि पिला सबु शिक्षा ग्रहण करि परिबे The great didactic discusses the following educational principles: the fundamental nature of children, the necessity to learn through senses, the need for adaptation of teaching materials in accordance with the needs of children, the individual differences among children, the understanding of motives and stimulate children, the positive discipline, the relationship of school work to life, etc., etc. These are the most important aspect of the educational philosophy of Comenius. So, it speaks of the greatness of Comenius that he spoke in 17th century of the importance of play, stimulation of the senses, and interesting books for children, all of which are an integral part of good preschool education today. जो जिनस गुड़ाक से 1700 ख्रीष्टाब्द से कही जो कथा को आज ठीक भाव में ग्रहण करिसेंती एवं आज गुरुत्व दौरान पिलापी केमती बही दरकार केमती कौन पाठशाला दरकार केमती कार्यक्रम हाँ उचित जो कथा कोमेनियस आज को प्राय 300 वर्ष तले कथा से कही Then let us discuss about Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, the great vagabond of Geneva बोली कहती जहाँ जे कि पिलादिने बहुत बदमाश थिले बोली कहा जाए जन पिलादिने कहारी कथा से शुणु नथिले कहा कथा किंतु once upon a time a child or child like Rousseau would become a best philosopher of the world. Nobody has expected such things from him. He was the father of naturalistic philosophy in education. So Rousseau was Swiss by birth. He greatly influenced the modernization of educational thought and practice. He introduced a movement in education which is called as naturalism. So naturalism was his best principle. He considered child as a blank slate. से कहूथिले जे पिला माने जतले जन्म होंदे तांको मुंडरे किछि न थाए. It is like a blank slate. आमे जहा चाहिबा सेतरे ताहा लिखि परिबा. तेणु पिला माननकु बड़ करिबा बढ़ेबा शिक्षा दबा एसबु निर्भर करे आम माननको ऊपर. आम माने जो माने वरिष्ठ नागरिक हंतु बा सामाजिक कर्मी हंतु बा गुरु गुरुजन हंतु बा विशेष भाव में पिता माता हंतु आम माननको ऊपर निर्भर करूची पिला माननकर शिक्षा. तेणु child is born as a clean slate and whatever that we feel like we can write on it. आमे जहा चाहिबा ता पर लिखि परिबा जेमती चाहिबा पिलाटा को सेमती गढी परिबा. कारण आम माने समस्त जानि चंती आपनकर परिस्थिति परिवेश मध्य गुरुत्वपूर्ण सब बेले पिला माननकर शिक्षा पई. जेमती पिला माननकर परिवेश परिस्थिति गुरुत्वपूर्ण जेमती पिला माननकर जा कहते खाद्य पेय जेमती गुरुत्वपूर्ण परिवेश परिस्थिति में सेति गुरुत्वपूर्ण. खाइबा जति इंपोर्टेंट परिस्थिति परिवेश में सेति इंपोर्टेंट. तेणु रुसंकर युक्ति है जदि परिवेश परिस्थिति ठीक रहिबो ताल पिला माने उचित शिक्षा पाई परिबे. Basic concept of his educational philosophy speaks. Rousseau's emphasis is on learning by discovery and the recognition of childhood traits, and the period of childhood are distinct from adulthood brought about revolutionary changes in the thinking of educators. Nature must be allowed. We must allow the child to learn. का घर देखो जी प्रियंका साहू has left the meeting. अच्छा, anyway, very good. Okay, then Rousseau stressed the necessity of play for learning. He said, make game an education and education as a game. Teach less from the book and more from life. बही ठारू शिक्षा दबा बही ठू अधिका शिक्षा दब समाज
तेणु जीवन रु जहाँ शिक्षा पाइबा ता बही शिक्षा ठार मध्य अधिका हबो एटा थिला रुसोंकर बाणी तेणु वी मस्ट हैव टू फॉलो दैट लेट चिल्ड्रन बी चिल्ड्रन ही सेड learning and not teaching should be the goal okay and Rousseau's conception of freedom in education growth and development the values of motivation in learning and the child's own active participation in learning are noteworthy in educational theory and practice तेणु रूसो सब कहते जे आमे जहाँ भी शिखिबा जहाँ भी जानिबा सेटा आमे परिवेश रु बेसी जानि परिबा than that of the books आमे बही ठारू परिवेश रु अधिका जानि परिबा so परिवेश the environment should be important for the child and we should build up suitable environment so that the children can grow with a positive spirit a natural spirit then we will discuss about John Henrik Pestalozzi 1746 Pestalozzi was born in Zurich, Switzerland जन्म ग्रहण करथिले he started an orphanage गोटे से गोटे आरंभ कले orphan home गोटे आरंभ करथिले at Bergdorf and Munchenbosch and was founder of a popular school of Yverdon. It was at these institutions he tried out his ideas. He wrote a manual mothers titled How Gratitude Teacher Teaches Her Children. Kemti Susanghatita Shiksha, main aspects of his aim of education stated that harmonious development of life, power, moral, intellectual and physical. Child education progressive development. Harmonious progressive development of man's innate quality. से कहवा कथा पेस्टालोसी गुरुत्व देइथिले कहा उपरे ना सब पिला मानन के भितरे किछि ना किछि अंतर्निहित गुणर विकास करिबा होछि शिक्षार कर्तव्य हार्मोनियस डेवलपमेंट सुसंगठित शिक्षा केमति दिया जाई परिबो जेमति शारीरिक वृद्धि संगरे मानसिक वृद्धि ताळ देके चलिबो मानसिक वृद्धि संगरे सामाजिक वृद्धि ताळ देके चलिबो तादर नैतिक वृद्धि मध्य चलिबो सब जाक सुसंगठित भाव रे चलिले शिक्षाटा में शिक्षा ऑलराउंड डेवलपमेंट अमंग द चिल्ड्रन It stated that education should be child centered education should be seen of the child and not from the already developed mind of the adult. You know, हमरो शिक्षाटा शिशु केंद्रिक हवा उचित शिशु केंद्रिक हेले कोन हबो ना आमे शिशु ऊपर गुरुत्व दबा तार आवश्यकता को दृष्टि दबा हमर जदि एडल्ट सेंट्रिक बा टीचर सेंट्रिक एजुकेशन हबो कोन ना शिक्षक या चाहउछन तेनो या should not be like it should be child centered and education naturally the children will feel like he advocated that the child should be studied slowly and thereafter education should be adopted हमें पिला को पढ़ेबा पूर्वरु ताकु आगे प्रथम भाव रे पढ़िबा we must understand the child so that automatically we can find out the ways and means how that child can learn and be educated in his future. So he emphasized the role of the mother in preschool education, starting that the task of educating the child inevitably began with the mother. Ma hochi guruttwapurna. Mother's lap is the first school of learning. मार कोळरु पिला माने जे प्रथम शिक्षा ग्रहण करंती ए कथा को से बुझीथिले एवं बुझिया he made great use of objects during his teaching put an object before the children तेणु से टीचिंग एड्स डेवलप करथले जो माने कि छोट छोट पिला मान को पई जोडा का तांको काम रे लागि परिबो यूज टू डेवलप दैट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स जोटा कि से माने पिला माने देखिले खुशी हेबे एवं ता द्वारा से सिटिंग से जो शैक्षिक उपकरण को जरिया रे से शिक्षा दवा पई चाहूथिले ओके अरुण परिडा नो मींस सुनीता लंका हैज लेफ्ट द मीटिंग वेरी गुड ओके Pestalozzi was the
forerunner of modern progressive education. His schools where teaching was based upon the child's nature and the child's spontaneous activity have had an influence on the present day. Preschool education, which emphasizes play, the manipulation of objects and games. So he has developed the habit of play-away method. Play-away. He is considered one of the best teacher of early childhood education and care. Then we will discuss about Froebel, Frederick Wilhelm August Froebel, 1782 to 1852. Froebel was impressed by Pestalozzi because Pestalozzi's philosophy and Froebel's philosophy goes hand in hand, goes together. So he opened a German institute. However, he left this after some time and went back to Pestalozzi's orphanage. से जो करथिले शिशु गृह करथिले सेठी से गले এবং तांग सहित जॉइन करी तांग सहित मिसिकरी काम करथिले. From this awareness emerged the idea of play gifts and play songs. He then founded his first kindergarten at Blackenborg. So kindergarten school of Frederick Wilhelm Froebel. The kindergarten school पिलामान छोट छोट पिलामान को पाई अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पाई सेटा बहुत भाव रे आवश्यक पड़ी छी बहुत लोक मान तको जाई चंदी आगुरु. Okay, so Froebel's other publications बहुत बही से मतलब लिखिथिले से बाबद रे The Education of Man. He wrote the true method of consisting in considering the mind of the child as a living whole in which all the parts work together and to produce harmonious unity. So basic concepts is educational philosophy of Froebel is Froebel considered childhood as not merely a preparation for adulthood. Rather, it has a value in itself and it possesses its own creativeness. Se कहूथिले जे Froebel considered childhood as not merely a preparation for adulthood. Rather, it has a value in itself and it possesses its own creativeness. पिलांको भितरे सृजनात्मक शक्ति अछि किछि सृष्टि करिवार किछि नुआ नुआ गढी तोलिवार सामर्थ्य अछि हमकु तको आगु बढ़िबा पड़े. We should not consider that each child will be an adult and he will perform as each and every adult used to do, not like that. So प्रत्येक पिलांको पाखरे किछि नुआ नुआ गुण अछि नुआ नुआ शक्ति अछि किछि नुआ नुआ जानिबार बा किछि परिवार इच्छा अछि ताको हमकु परिप्रकाश करिवा, then education will be successful. Froebel emphasized the totality of educational endeavor in order to realize the divine character of the universe and one's part in it. Man needs his senses and emotions as well as reasons. They all are windows. The soul education must be aimed at developing all these capabilities. Froebel believed that the growth of the child is directed by an inner force. अंतर्निहित शक्तिर विकास करिबा उचित शिक्षा. Each child, the growth of the child is directed by his inner force. भीतर गोटे तमन्ना आसुथबो भीतर गोटे इच्छा होउथबो से इच्छार परिप्रकाश होची शिक्षा. Play he felt as an essential factor in growth of the child. खेल होची गोटे गुरुत्वपूर्ण घटना कारण खेल रे कोन हबो खेल रे केवल जे शारीरिक शक्ति अपचय हुए से कथा नहीं तादरे मानसिक शक्ति मध्य प्रयोग करा जाए. खेल रे शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास संभव होता है खेल द्वारा. खेल प्ले इज वेरी इंपोर्टेंट. एजुकेशन इज फेल्ट should be conformity to the child's nature and needs. शिक्षा प्रत्येक शिशुंकर आवश्यकता तार अंतर्निहित गुण को प्रकाश करबा उचित एवं शिक्षा एमिति होबा उचित जहा कि से शिशुंकर अंतर्निहित गुण को प्रकाश करिवारे सहायक होइतिबो ताको विरोध करू नथिबो. एमिति न जे वी शुड नॉट इंपोज एनीथिंग ऑन द चाइल्ड. आमे सब जिंस पिलांक ऊपर जबरदस्ती लदी देबा पई चेष्टा करबा ता नै. पिलांक आमे छाडिबा तांको स्वाधीनता देबा एवं सेमाने तांको भीतर थिबा शक्ति को विकास करबा समर्थ हेबे से कथा जिंदी संभव होबा शिक्षा माध्यम रे. The children's kindergarten, he established the school kindergarten माने children's garden.
चिल्ड्रेन्स गार्डन थिंक ऑफ द कॉन्सेप्ट तेणु स्कूलटा एमती होइथिबा दरकार जोटा कि पिला माने अनुभव करिवे जे एटा गोटे स्कूल गोटे बंदीशाला नुहे रादर गोटे उद्यान प्रमोद उद्यान पिला मानक पई शिशु उद्यान बा प्रमोद उद्यान से माने ता भितरे जहा चाहिबे ता करि पाउतले सुंदर सुंदर गछ बलिया निजु को अनुभव करि पाउतले एवं से माने भाबिबा उचित जे से माने स्कूल ले नाहंती बा घरे नाहंती बा कहारी नजरबंदी होइकि रहि नाहंती रादर से माने मुक्त होइकि गोटे सुंदर बगीचा भितरे बुली चलीचंती बुलुचंती शिक्षा ग्रहण करचंती so children's garden school is called as kindergarten and teacher is the gardener, school is the garden, teacher is the gardener and students are the flowers and the plants. So he has developed this concept that these children should feel that they are the plants. Teachers should undertake the responsibility that they are the gardeners. ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାଳି ଯାହା ମାଳିର କାମ କ'ଣ ସେ ଗଛକୁ କେମିତି ପାଣି ଉଚିତ ପାଣି ଦବ ଉଚିତ ଗଛରେ ଉଚିତ ପାଣି ଦବ तार सार दब ताकू ठीक सूर्य किरण पाउछ नै ताकू लक्ष्य करिवो तार जहा आवश्यकता को सब से पूर्ण करिवो तापर से गछटा ऑटोमेटिकली बढ़िबो गोलाप गछरु गोलाप फूल बाहरिबो एवं कन्यर गछरु कन्यर फूल फुटिबो एथरे के दिमत हवार किछ नै तेणु पिला जतबे निजको भाबियो से गोटे छुटिया छुटिया गछ बोली आ शिक्षक जतबे भाबियो से माने होतने माळी बोली तो naturally the school will feel that it is not a school rather it is a garden and the garden beautiful garden जहादरे कि छोट छोट पिला मानन को जरिया रे बढ़िया बढ़िया फूल फुटिछि एवं जहा को देखि से माने समस्ते एवं ये समाज निश्चय गर्वित अनुभव करिवे सो अकॉर्डिंग टू फ्रोवेल प्ले इज द प्योरेस्ट मोस्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऑफ मैन एट दिस स्टेज ए समय आमे पिला मानन को जते प्रकार खेलना जते प्रकार खेलिबार सुयोग दबा उचित तेणु पिला माने जते खेलिबे तांकर मानसिक विकास हो तांकर शारीरिक विकास होवा सहित तांकर मानसिक बौद्धिक विकास मत होई परिबो एवं से माने शेयरिंग कोन जानि परिबे then according to Froebel play is the purest most spiritual activity of the man at this stage it gives joy freedom contentment inner and outer rest peace with the world an important component of kindergarten was creativity because it was child centered जेतोटा शिशु केंद्रिक किंडरगार्टन स्कूल रो बेसिक फिलॉसफी थिला जे एटा शिक्षक केंद्रिक नथिला एटा शिशु केंद्रिक थिला शिशु केंद्रिक हेले कोन हबो ना शिशु मानन को हमें तांकर अपॉर्चुनिटी दबा तांको हमें गुरुत्व दबा तांको हमें सुयोग दबा जे से माने निजर अंतर्निहित गुणर केमति सुविकसित होई परिबो से विषय ध्यान दबा पे एवं से ही होतला Okay, then about he has given the idea of songs, music, play, games, so that students will enjoy their life. As long as they are in the school, they will feel that they are free birds. They are enjoying the environment. They are learning everything from it, and they are sharing their feelings freely and frankly. एमती मु गोटे कथा तुम कहू चाहिए पिला माने जे देखो जे आमे जदी पिला मानन को सेमती का सुयोग न दबा जदी हम तमको तांको भाबुचंती समान होचंती गार्डन न गोटे गोटे छुटिया छुटिया गछ बोली कोन गार्डन ना हम गोटे प्रकार गछ लगै छन गार्डन रे सीजनल गछ लागुची विभिन्न प्रकार फल फूलर गछ लागुची विभिन्न प्रकार अन्य प्रकार गछ लागुची बाउंस गछटी लगे जे हम चादर चाहबा जे मल्ली फूलटी फुटिबो बा मल्ली गछटी लगे जे हम चाहता रजनीगंधाटी फुटिबो संभव रजनीगंधा जगह सुंदर मल्ली जगह सुंदर बाउंस जगह आवश्यक सब समस्त निज निजर दक्षता अनुसार निज निजर माने प्रकृतिगत व्यवस्था अनुसार से निजको विकसित करिवे नेचुरली वी मस्ट गिव progress, they can flourish, they can develop their attitude, their future in that way. Okay. Then last but not least, the teacher in the kindergarten is not to remain passive. Rather, she must carefully guide children's play with gift and occupations.
ता अर्थ नुहे जे किंडरगार्टन खाली शिक्षक माने बसिकरी रहिबे से माने प्रॉपरली गाइड करिवे गाइड करबा अर्थ नुहे तो बड़े बाडे बडी करी पुनी तको बाट को आनिबे नॉट लाइक दैट they must see the child what they are doing how they are doing if they are completely wrong if it is life risk they must come forward and help them to get rid of that risk. So Fogel said that women should be trained for working with children at this stage. Pilamane, why? Why? Hello? 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 Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Hello? Am I audible? Sir, sir. Yes, sir. Am I audible? Hello? Yes, sir. 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 କୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। Yes, sir. Very good. Very good. Okay, baby, selling. Kang bagus. କଣ ସବୁ ଆମେ ନାଇଁ ଯେ ସାର୍ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଶୋଇଲେ ଗୀତ ଗୀତ ଅଛି ନା ପାଇଗଲା କିଏ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ଲିଜ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଏମିତି हेलो ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ରୂପାଲି ସବୁ हेलो Please all are mute. Hello. Hello, sir. Hello. Hello, sir. Hello. 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 Joining what he's joining. Hello. What minute he's joining, he will be, is back. Just a minute. Hello. Hello, sir. Wait for 2 minutes. Your ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ କିଛି ସାର୍ ସମୟ କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କି କରନ୍ତୁ ସାର୍ ଜଏନ୍ କରିବେ ସାର୍ ଜଏନ୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେତେବେଳଠୁ meeting code କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ HWN ହଁ
बढ़िया सुबुची सर अपन ताकू ने कि संध्या ने मोंतुनी आपन रेकॉर्ड ता आज संध्या रे पठे देबे एके नेला ना नहीं हां ना देखि ये तो लॉगिन करो देख लो कि बाथरूम आसी मोबाइल नहीं करे हां हां देखिए हां मत देखा गला एबे आपन को आसला देखो तो आपन को देखि पारे कोई गले आपन देखि पारछो हां आसी हां हां कोना कोन देखो चालू चालू देख ବନ୍ଦିତା ରାଣୀ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। कालो ए सुनो आ म्यूट कर देना ବନ୍ଦିତା ରାଣୀ ମ୍ୟୁଟ କର ପ୍ଲିଜ। ଭିଡିଓ ବି ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦିତା ରାଣୀ ମ୍ୟୁଟ କର ଆଗ ପ୍ଲିଜ। हमर माइक्रोफोन ता तळे तळे देखो तो देखो ना आपन तो म्यूट देखो छी मते आपन म्यूट देखो छी सर ना 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 आसी आसी देखो जी जॉइन ऑडियो की तब आमर पड़े हला से आसुची ବନ୍ଦିତା ରାଣୀ ଭିଡିଓ ୱିଥ୍ ଅଡିଓ ଏଇଟାକୁ ମ୍ୟୁଟ କର। बुले आपन तळे लागि तो ना तो दे रे कट्टा मार के काट एमपला तो बनवा କଥା न हां आरसी लिखा है तो काटनु बे हां सुइला भरा तू बे रेकॉर्ड आरसीटा ତାପରେ आते की करमु ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟୁଟ କର ତାପରେ ତୁମ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କର। आपने ट्राई ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି। ଆପଣ ସେ ପୁଣି ଇଏ ଯେ ରୋମ୍ ରେ କଲେ ନା ଦୀପ୍ତିମୟୀ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ସେଇଠି ଭିଡିଓ ଆସୁଛି ମ୍ୟୁଟ ଆସୁଛି
ଭିଡିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡିଅ ହେଇଯିବ। କରିଦେଲି ମୁଁ ଦେଖିଲ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଉପରେ ଟ୍ୟାପ୍ କରନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବେ ଆସୁଛି ମୋନାଲିସା ଭିଡିଓଟା ମ୍ୟୁଟ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭିଡିଓ କଲ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ହେବ। ଜେନା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ସବୁ ସ୍କ୍ରିନକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ନିଜ ସ୍କ୍ରିନକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେନି ତିଲୋତ୍ତମା ଜେନା। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଯଦି ରିମୁଭ୍ କରିବେ ଆଉ କେବେ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ପଶି ପାରିବେନି। ତିଲୋତ୍ତମା ଜେନା ଷ୍ଟପ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ। ଫରଏଭର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ କାଢିଲି, ଆପଣ କ୍ଲାସକୁ ଆଉ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେନି କେବେ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ତିଲୋତ୍ତମା, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁନି, ସେଥିରେ ସାର୍ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବେ। ତିଲୋତ୍ତମା ତମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କଲେ ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ତମେ ବୁଝୁନ କଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟାକ୍ କର, ଆଉ ଥରେ ଜିମେଲକୁ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କର। ହେଲା କି ସାର୍? ତାପରେ ସେ ମିଟିଂ କୋଡଟା ଦେଲେ। ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଟିକେ ଚାର୍ଜ ବସିଲେ ଲାଇନ ଆସିବ। ନା ଦେଲେ ତ? ଆରେ ଆମଟା ତାଙ୍କ ପିକ୍ଚର ଛାପିକି ତା ମା ହଁ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ସାର୍ ବା କହିଲେଣି ମ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋନାଲିସା ମହନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନିତା ରାଣୀ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ମୋନାଲିସା ମହନ୍ତ ମୋନାଲିସା ସସ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ପ୍ଲିଜ ଆମର କଟିଗଲା। କାଟି ହବ ନାଇଁ ତୁମର ଘଟ ଆମର ସେ ମୁଣ୍ଡ ଇଏଟା ଇଏ କରୁଛି। ଆରେ ମୁଣ୍ଡ କଲି ସାର୍ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଛି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଦିତା ମ୍ୟୁଟ୍ ରାଣୀ ଆଉ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋନାଲିସା। ବନ୍ଦିତା ରାଣୀ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହିବି? ହ୍ୟାଲୋ ସଞ୍ଜୟ ଜଣକୁ ସାର୍, କହିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି। ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କର ବନ୍ଦିତା। ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କର ବନ୍ଦିତା, ରେକର୍ଡ ହଉଛି ଏଇଟା ସବୁ।
genetic, the human potential, etc., etc. And his basic ideas was that she was insisting on the uttama parivesh, I mean suitable environment for every child, for the growth, development, whatever of a child. We need a very good environment. If the environment is all right, so naturally the child will definitely grow in a suitable way, in the desired way. Okay. So this is what you mean as the basic ideas of her educational philosophy. She was against material rewards and punishments. The material reward or punishment viruddhare thile. She was never giving any importance to material reward and punishment. She believed that early child is unique and rare of progress is also different for each child. And the rate of progress is always different from each child. Each child grows at his own pace. Sabu pila mane nijo nijor jetiki capability upare develop karanti naturally. And each child develop at his own rate. आमे कहबानी जे से दौड़ी की जाउची आमे काहे दौड़ीबानी जो कथाटे मु आगुरु आलोचना करूतले while I was discussing about the 10 different roles of the parents for growing a child to an adult. So similarly, Maria Montessori has also given stress that we should not give what you call we should believe that each child progress in his own way, and he should be allowed or she should be allowed to proceed in his own way of the interest. Okay. And she was against material rewards and punishments. She believed that every child is unique and the rate of progress is also different from each child. The first 6 years of life is the most crucial period of a child, when teacher can capitalize on the natural energy of children. এই সময়টা শিক্ষক ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ବିକଶିତ କରେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେଇବ. That is most important. The first 6 years, that it has been told by Maria Montessori that the first 6 years of life is the most crucial period of child life. Okay? Hello. Are you hearing me? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Montessori asserted the of knowledge. As you know, we have 6 senses. ଆମ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ଅଛି. ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏହି ସମୟରେ ଥାନ୍ତି ଯେ କି ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଣର ବିକାଶ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି. ତେଣୁ 6 years of life is very important and the senses are the gateways of knowledge. ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ରହିଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ସବୁ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି. She pointed out that senses are very active during the early years and a lot of learning takes place during this period. ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ ବହୁତ ପ୍ରଖର ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅଧିକା କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାଏ. Okay? Then she also attached importance to motor and physical development as a part of the early childhood education. Se କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର motor development ଆଉ physical development, these are also very important aspects of child development during early years of life. The concept of children's house was developed by her. So that's why she has developed a school, self-learning, okay, which is the emphasis on encouraging the child to discover and understand concept by herself. Self-learning, nije kendi sikhibo. Okay, that was the Montessori system of child-centered education. The child is free to choose the activities he desires, yet there is structure with freedom. The structure, freedom is the role of teacher. The role of teacher is very important. Montessori replaces the word teacher by the word of directress. Directress. देखिए direct करिवो पिला माननको. As she thinks
that the function of the child I must diminish to it. Okay? Montessori replaces the word teacher by the word directress, as she thinks that the function of the teacher is to direct and not to teach. So teacher's role is to direct. Direct means to निर्देश दबो. एटा करो, सेटा करनी. The motto of directress should be, I must diminish to let you grow. ମୁଁ ଦେଖିବି ତମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି ବା growth ହଉଛି. She suggested that a teacher should care for the child like a gardener who cares for plants, so that the natural growth of the child is properly guided in the process of unfolding itself. The directress should be partly a doctor, partly a scientist, and completely religious. Like a doctor, she should avoid scolding or suppressing the patient in order to avoid worst situations. Like a scientist, she should wait patiently for results. Like a religious lady, she should be there to serve the child. ତେଣୁ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଶିକ୍ଷକର ବ୍ୟବହାର ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ, she should act as a doctor, she should act as a scientist, and she should act as a priest. ଯେମିତି ଚୁପଚାପ ରହିବ, ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବ ପେସେଣ୍ଟ କୁ, so that patient ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ତାର କେମିତି ସେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିବ ବୋଲି। ସେମିତିକା ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, so that ତାର ଫଳଟା ଠିକ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଲିଡର, ସେ ଗୋଟେ କଣ କରିବ ନା କେମିତି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ, ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ଦରକାର। So merits of Maria Montessori's method is, Montessori ushered a new era in early childhood education. She wrote, today there stands forth one urgent need, the reform of method in education and he who struggles towards this end is struggling for the regeneration of man. To her, the child was God. ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଶିଶୁ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର. They are the real God. So many preschool today are based on Montessori method. Others, while they have not adopted her approach, use the educational materials in one form or the other. So, like Pestalozzi and Vogel, the approach of Maria Montessori was child-centric approach. But here are certain limitations of Montessori method. There is a heavy reliance on the educational apparatus and materials. Beyond a point, the child as well as the teacher, the child's expression is limited to what is possible with these materials. The pupil is expected to do different types of exercises with the help of the apparatus, and the teacher also has to the didactic, to the result that the free expression of the children is limited, as is work of the teacher. Also, the mental equipment is expensive. Educational apparatus and materials are we have to depend on much on that. Demerit Montessori equipment developed that equipment was too costly. So individualized teaching, which is the hallmark of her method, required that the educator work with a few number of children. This is not always possible in our preschools. ସମ୍ଭବ ହଉନାହିଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା, କାହିଁକି ନା ଆମର ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ର ଜଣେ ବା ଦି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି. The teacher in this system takes special care in keeping records of the height, skull, and limbs of each individual child. She hardly observes temperament and other emotional traits. These, as you know from your body, from your study course, one contribute in a major way
to the child's social and emotional development. हमें कौन करथुन तांकर को पिला केते ग्रोथ हला कार केते हाइट हला कार केते लिम्स डेवलपमेंट हला ए सब जिन सोडा देखुतिले किंतु अन्य सोशल एस्पेक्ट इमोशनल एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट करथले. So these are some of the limitations of Maria Montessori's method of education at the early childhood stage. And now let's discuss about one of the leading Indian educationists, who is Rabindranath Tagore. Tagore, you know, you must be knowing that this is very close to our state. We had one system of education that is called Vishwavarti. So he is the father of that, the founder of that Vishwavarti. And Tagore is popularly known as Gurudev, as a poet, an educationist, an artist, and a social as well as a religious reformer. Tagore जे केवल जन शिक्षक थिले से कथा नुहे. टागोर थिले गुरुदेव गुरुदेव बोली समस्त डाकुथिले. से गोटे सुकवि थिले, भल कविता कविता लिखुथिले एवं ए गुड एजुकेशनिस्ट एंड ए सोशल एंड religious reformer भी से थिले. Tagore was a naturally believing in immediate and direct contact with nature as a means of education. विश्वभारती शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा करते जो विश्वभारती सिस्टम ऑफ एजुकेशन केमतीका केडे सुंदर परिवेश भितर केमती ओपन एयर भितर पिला शिक्षा दिया होतला से समय बर्तमान मध्य प्राय सिस्टम एपर्यंत भी उज्जीवित अछि. तेणु गोटे भारत गोटे सुनामधन्य गणा जाए. Tagore emphasized the following three methods of teaching. One was called as peripatric method. And जोटे peripatric method माने जोटा education through moving around. भ्रमणशील पद्धति रे शिक्षा ग्रहण करवा. आमे जिंती एक्सकर्शन पिकनिक करूचंदी, स्टडी टूर करूचंदी, पिलान को स्पॉट पुनौचंदी, प्रोजेक्ट मेथड करूचंदी. सो मेथड द्वारा कोन होछ ना पिला माने डायरेक्टली ज्ञान पाउचंदी, डायरेक्टली विषयटा को पढ़ी पाउचंदी, जानि पाउचंदी, बुझी पाउचंदी. सो प्रैक्टिकल गेनिंग द नॉलेज थ्रू प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन. So he believes in that peripatric method, and he was believing on activity-based method, believing in learning by doing. He emphasized that children must learn through activities. Learning should be active, no, it should not be in a passive. Learner should not sit as a passive listener. Rather, he should active and take active part in the process of learning. Then learning through the environment and परिवेश माध्यम रे किंतु शिक्षा पाइबा. तेणु से जो करथिले शांति निकेतन देखिबा कथा सेटा सबुबेले देखिबो सेटा एकदम पूरा शांति प्रिय जगह बढ़िया लागे. That place is itself is, you can see the nature of the educational principles of Rabindranath Tagore quite reflected in that area of Shanti Niketan, Vishwavarti. Tagore stressed teaching through environment. To the preschooler, he said teaching should be done when they are on nature, walks, or on track. If possible, I remember children to carry their notebooks and to go on while they are on track. They should. So, पिला माने शिखिबे, जानिबे, भ्रमण जिबे, बुलिबा को जिबे, so that they can learn by themselves. From the environment. And regarding the teacher-student relationship, he has told that student-teacher relationship was the most significant aspect of educational philosophy. The primary function of the teacher, he believed, is to use an atmosphere conducive to creative activity. Teacher role शिक्षक एमितिया गोटे परिवेश सृष्टि करबा दरकार जा द्वारा कि साई पावर आपण म्यूट करू नांती से छुआ कोन कांतु छ हम कोन ताको सुनिबो ना कोन सार को कथा सुनिबो नै.
ସାର୍ ଙ୍କ ଭଏସ ଶୁଭୁନି। ସାର୍ ଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲିଜ ମିଉଟ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ୱେଟ୍ ଙ୍କ ଭଏସ ଶୁଭୁନି। ଶୁଣୁନି ନା ସାରଙ୍କ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତମେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ସମସ୍ତେ ରୁହ ମ୍ୟୁଟ କରିକି ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ରୁହ ସାର୍ ଆସିବେ ଜଏନ କରିବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ପୁଣି କଟିଗଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି କି ଏବେ? ଭଏସ ବି ଶୁଭୁନି। ଆପଣ ସେମିତି ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କରିବେ। और ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ତମେ ଚାଲୁ ଠିକ ଲାଗିଲା ପୁଣି କଟ ଲାଗେ। ନାଇଁ ଏତେବେଳେ ତ ନୁହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟୁଟ ଅଛି କି? ମ୍ୟୁଟ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍। ଆପଣ ଏଇଟା ପୁଣି ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି କି? ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଯୋଉଟା ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଇଛି କି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଏ କଲେ ମ୍ୟୁଟ ଅନମ୍ୟୁଟ ଦେଖେଇବ। That the education of the child does not mean that educating the child doesn't mean that by learning reading, writing or arithmetic. It should be the all-round development जोटा कि पूर्णांग विकास शिशुर पूर्णांग विकास शिक्षार एकमात्र लक्ष्य हेबा उचित. So he has told that he has basically started in 1937. He has started the basic education of Nai Talim. In Wardha, which is also popularly known as Wardha scheme. I do not know whether you know about it or not. The real education begins from conception as the mother begins to take up the responsibility of the child. It is he, Mahatma Gandhi, has rightly told that real education begins from the conception while the child is in the mother's womb. ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ମା ଗର୍ଭରେ ଜାତ ହୁଏ ସେଇ ବେଳ ଠାରୁ ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ. And it was now that he felt that the real education begins from the conception as the mother begins to take up the responsibility of the child. It is very clear that if this new education is to be effective, its foundation must go deeper. It must begin not with the children, but the parents and the community. So main aspects of Gandhian philosophy was that child-centered education. He wants that children should learn by themselves through different types of crafts, environment and other things. He has divided the stages of development into 4 stages. Childhood जो आम जो जन्म रु 7 वर्ष कहंती से ताकू कहले जे याकू चारि भाग रे विभक्त करा जाई परिबो. स्टेज 1 हला conception to birth, सेटला स्टेज 1. जेतेबेले केवल तार गुरु सेतेबेले थांती के ना ओनली हर मदर. तार माँ होचंदी एकमात्र गुरु. Only her mother is the best teacher at that particular stage.
Then actually stage 1 टा जोटा conception to birth, stage 2 टा हला birth to 2.5 years, 2.5 वर्ष पर्यंत, जन्म रु 2.5 वर्ष पर्यंत भी दायित्व होची कार केवल मार। तेणु माँ ही तार जत्न निये, माँ बा बापा पेरेंट्स मानकर बा घरर परिवार अन्य सदस्य मानकर से माने समय समय जमती नेपाल रे जमती मु कहतली जमती हमर गोटे ग्रुप करिकरी से माने पिला मन लालन पालन दायित्व नउथिले सेमती का दायित्व का दिया जाई पारे, किंतु एठारे शिक्षकर किछि भूमिका न थाए बा बाहर परिवेश रे थिबा अन्य लोक मान विशेष किछि भूमिका न थाए। से मुख्य भूमिकाटा निर्भर करे माँ ऊपर बेसिकली। ओके, then the third stage that which starts from 2.5 years to 4 years, एई समय कोन हुए ना पिला माने खेल प्रिय हो जांती। एई समय पिला गुटे खेलना दबा, ता सहित खेला खेली करबा, तांको विभिन्न प्रकार खेल रे इन्वॉल्व करेबा, so that people can learn by that different stimulation through play activities. Then 4 वर्ष रु 7 वर्ष education for self help, एटा देखो एटा दिस इज a basic concept, that's why this is called as basic education. से कहतले पिलाटा 4 वर्ष रु 7 वर्ष भीतर पिला को जदि आमे अंतु गछरे कोठी टिके पानी देई दे, अरे जिंसटा टिके नैया एठु सेठी के नैया, जो काम गुडा का से पिलार कैपेबिलिटी कैपेसिटी को नै करी करा जाई परिबो, सेही भलिया काम रे ताको नियोजित करिबा उचित, सो दैट से तार शिक्षा सहित मौलिक कर्तव्य प्रति मध्ये ध्यान देई परिबो, so that the basic concept of basic education that can be fruitful. So after 4 years of age, the child participates in activities like cleaning the classroom, washing small vessels, watering the plants, measuring and weighing things, gaining cloth with small iron rod and wooden plank, bringing water and other similar activities. एड़ा छोटी छोटी काम ताकू देले, so that the child can child can orient himself for the basic needs of the society. Okay, so this is all about the Mahatma Gandhi's basic education Nai Talim, and which is still prevalent, but it is not it was considered as the poor man's education, so it is almost not available in the country at present. Rarely it is available. Then the next is we will discuss about the Tarabai Modak. Tarabai Modak is really a social reformer who has been awarded as Padma Bhushan. Padma Bhushan Srimati Tarabai Modak. So she has tried to Indianize the system of education with Gujubhai. So Gujubhai को सहित मिशिकरी से केमती शिक्षाटा को पाश्चात्यकरण रु दूरे रखिकरी भारतीय ढंगरे आमे करिबा। Gujubhai, besides another educationist in the field of preschool education, she has worked with Bodak and developed the education with Indianizing the system of education. This was the period when the national movement in education was at its peak and efforts were on to Indianize the system of education. Gujubhai and Tarabai were convinced of the importance of preschool education, and they started the movement for preschool education in India. Preparing the necessary literature for student, teacher, they started a training college for pre-primary teachers in 1925, the first of its kind in the country. जोटा कि देशर प्रथम बोली ताको कहा जाए, जोटी से प्राइमरी प्राथमिक शिक्षक मान को पाई गोटे केमती शिक्षा दिया जाई परिबो तबे टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गोटे स्थापन करिथिले 1925 मसिया रे. ओके, in 1936 Tarabhai started a center for preschool children called Shishu Bihar Kendra at Mumbai. This center had been established in a well-to-do locality. से प्रथम आरंभ कले गोटे अर्बन एरिया रे, तापर गले से रूरल एरिया को, एवं लास्टली शी एंटर्ड इनटू द ट्राइबल एरिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन. इज द फाउंडर ऑफ द बालवाड़ी, जोटा कि आज काली वर्तमान तको अंगनवाड़ी बोली कहा जाउची. एक्चुअली इफ वी
go that way, we can understand that it is Tarabai Modak's idea which has given us the present day Anganwadi. So that she is considered as the founder of Anganwadi system of education. Tarabai also initiated the concept of middle school. Middle school means it is what we call open schools. That will be grass filled garden, like grass filled plain area, and in which the children will feel like to learn. So middle schools, where the teachers went to the meadows to teach the children who could not leave their cattle. जो कि गाई फाई चलुवे कौन करते पाखर जाकर पहुंचे से पिला से पाठ पढ़ेबे. The Gram Bal Shiksha Kendra at Kosabad, which under Tarabai's leadership began the program of preschool education for the tribal children of Kosabad Hills. Anyway, से सहर आरंभ करी ग्रामांचल को जाइकरी परिशेष अर्बान जो ट्राइबल एरिया को जाई से जगह सब शिक्षा माने बेसिक एजुकेशन प्री स्कूल एजुकेशन दवा पे समर्थ होइतिले एवं it is nowadays the Anganwadi which you are seeing today, it is the contribution to the idea which has been implemented in the form of Anganwadi, which has been created by Tarabai Modak. Then last but not the least, we will be discussing about Anutai Wag. Anutai Wag, in fact, he was like, what we call, he was impressed by Tarabai Modak, and he worked closely with her. Both of them worked together, and while Tarabai initiated the concept of the middle school, it was Anutai Wag who developed and carried this concept further. ये आरंभ कले जे कि ताराबाई मोडक जो मिडल स्कूल जो गार्डन में जो गाई चरा गाई गाई मान जो घासबास खाउतले से बड़ा जगह रे जतले स्कूल आरंभ कले पिला शिक्षा दवा आरंभ कले ताको आहुरी भल भाव रे पहुंची पारे लोकन पाखरे अनुताई वाग the school, the concept was developed by say Tarabai Modak, and it was taken to further areas. It was like Anutai Wag. Anutai Wag, who died in 1993, held executive positions in several organizations and communities in her life. So she had worked as different posts and positions. She was the director of the Gram Bal Shiksha Kendra of Koshabad. She was also president of the Thane District State Shakti Jagriti Samiti, etc., etc. And she was in fact a social reformer who has contributed a lot for the development of preschool education in the not in the nation, but has also tried. They have also tried to contribute to the entire world. With these words, thank you very much for having a patient listening. And whatever problems that you have, feel free to contact me. This is my what you call my WhatsApp number. You can give your problem, your doubts, your confusions, if any. Okay, thanks a lot.